Good afternoon, friends. Another important video on one of the critical question on place of supply. And here I'm going to play interplay for registration, for place of supply, and for GST input tax credit. Three components merge into one critical question. An example is, I'm a landlord registered in Delhi and I got one immovable property, commercial immovable property located in Maharashtra. I have let out this commercial immovable property to a tenant, to a company registered in Maharashtra. So very simple, supplier, landlord registered in Delhi, having immovable property, commercial immovable property in Maharashtra, and it is being let out to a client, to a company registered in Maharashtra. Now I'm posting three queries for you to answer. So you can comment in the chat box, comment box, and see my answer. So as and when I progresses, you must answer it. First question, do this landlord who is registered in Delhi need to take registration in Maharashtra for the region this immovable property is located in Maharashtra? First question. What would be place of supply for determining the transaction whether intra or inter, and it is dependent upon where you are registered, so location of supplier and place of supply. And third, for availing GST input tax credit by a client registered in Maharashtra, what he would be preferring, what he would be looking for. So giving three questions, now answer these three questions one by one. For registration, as per section 22 of GST Act, we have to take registration wherefrom we are supplying goods or services or both. So we have to take registration wherefrom. So question is, this landlord registered in Delhi, is he supplying services from Delhi or is he supplying services from a property located in Maharashtra? This is the question. When you go back to location of supplier definition in IGST Act, it is saying that it would be in a sequential manner. The place where you have taken the registration, then fixed establishment, and this fixed establishment is characterized by permanent degree of human resources. Third, is establishment most directly concerned. And four, usual place of residence. If I go back to this definition of location of supplier, then if supplier is registered in Delhi, then that can be considered that that is the place where from supply of services are happening. And he's registered in Delhi. Is he required to take registration in Maharashtra? This is the big question. Why only for one property? Just assume he is having 30 commercial property, immovable property in 30 different states. Is he required to take 30 separate registration? As per me, he can continue to supply services from Delhi registration, first part. And as per location of supplier definition as given under IGST Act, it is the place where you have taken the registration. First part. Second part. Then what is the reference of place of supply? Place of supply in case of immovable property is location of immovable property, which is Maharashtra. But whether place of supply is relevant for registration, place of supply is not relevant
for registration. Place of supply is important only to determine whether transaction is intrastate or interstate. So in this given situation, place of supply, which is location of immovable property, Maharashtra, and location of supplier is Delhi, transaction is IGST leviable. And this IGST charged by landlord to a tenant registered in Maharashtra, he will get the credit provided it is being used for taxable supply, for his taxable supply. So no need of separate registration in Maharashtra. This landlord can charge IGST for 30 immovable property in 30 different states. So this transaction is clear. Credit is also available to the recipient, being B2B supply, used for taxable supplies. Now only one point here we need to take call, business call. We have to decide as per our business exigencies. Any input service availed by this landlord who is registered in Delhi pertaining to this immovable property. So pertaining to this immovable property, if any input services are being procured, let's say cleaning services, let's say security services pertaining to this immovable property located in Maharashtra, then such supplier would be charging CGST and SGST. Now if CGST and SGST charge and you're not having registration in that respective Maharashtra state in our example, then what happened? This credit will not flow to your Delhi GST number. That is the only drawback. That is the only drawback. So you need to take your business call as per your business exigencies. Do you want to done away this credit portion so that you are getting each from registration, and not only registration, subsequent compliances under GST law? You can take your business call accordingly. But conclusion is, no separate registration required in Maharashtra. You can continue with your Delhi registration and charge IGST as interstate supply, of which buyer who is registered can take credit provided used for taxable supplies. Only problem, ITC, if any certain input services related to immovable property procured by landlord, if he is not having a separate registration in Maharashtra, that is going to be a cost. That is the only crux. So decide accordingly. In हिंदी, अगर आप लैंडलॉर्ड हैं, दिल्ली में रजिस्टर्ड है, आपकी एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है बॉम्बे में, महाराष्ट्र में, और आपने इस इमूवेबल कमर्शियल इमूवेबल प्रॉपर्टी को लेट आउट किया फॉर क्लाइंट रजिस्टर्ड इन महाराष्ट्र. अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो बहुत क्रिटिकल क्वेश्चंस हैं. पहला क्वेश्चन, आप लैंडलॉर्ड दिल्ली में रजिस्टर्ड है, आपकी प्रॉपर्टी महाराष्ट्र में है, तो क्या आपको सेपरेट रजिस्ट्रेशन महाराष्ट्र में लेना होगा? प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा?
इंटर क्या होगा, और जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट के ऊपर इसका क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है। सो हम इंटरप्ले करेंगे रजिस्ट्रेशन, प्लेस ऑफ सप्लाई एंड जीएसटी आईटीसी का फॉर रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, कमर्शियल इमूवेबल प्रॉपर्टी, जिस पे जीएसटी चार्ज करेंगे आप। पहले रजिस्ट्रेशन का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। सेक्शन 22 ऑफ सीजीएसटी एक्ट कहता है यू हैव टू टेक रजिस्ट्रेशन फ्रॉम वेयर यू आर सप्लाइंग गुड्स और सर्विसेज और बोथ। तो आपने कहां से सप्लाई किया, दिल्ली से जहां आपने रजिस्ट्रेशन ले रखा है, या महाराष्ट्र जहां पे आपकी प्रॉपर्टी लोकेटेड है। तो लोकेशन ऑफ सप्लायर की जो डेफिनेशन आईजीएसटी एक्ट में दी गई है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वो कहता है कि जहां आपने रजिस्ट्रेशन लिया, दैट वुड बी लोकेशन ऑफ सप्लायर या fixed establishment, and fixed establishment is characterized by permanent degree of human resources. Third, establishment most directly concerned, and fourth, usual place of residence. अगर हम इस डेफिनेशन को सिक्वेंशियल मैनर में देखें तो जो आपका प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन है दिल्ली, आप वहां से सप्लाई ऑफ सर्विसेज कर सकते हैं। अब आपकी प्रॉपर्टी चूंकि महाराष्ट्र में लोकेटेड है, तो क्वेश्चन ये आएगा पीओएस, प्लेस ऑफ सप्लाई तो महाराष्ट्र हो गया बिकॉज ऑफ लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो क्या रजिस्ट्रेशन भी महाराष्ट्र में लेना होगा? नहीं सर, आपको नहीं लेना होगा। रजिस्ट्रेशन वेयर फ्रॉम यू आर सप्लाइंग गुड्स और सर्विसेज। पीओएस तो सिर्फ इसलिए है कि आप ट्रांजैक्शन को इंट्रा मानेंगे या इंटर मानेंगे। पीओएस इज नॉट ए कंडीशन फॉर टेकिंग रजिस्ट्रेशन इन जीएसटी लॉ। यानी यू कैन कंटिन्यू टू हैव रजिस्ट्रेशन इन दिल्ली, एंड सिंस पीओएस इज महाराष्ट्र, ट्रांजैक्शन वुड बी इंटरस्टेट। आप आईजीएसटी चार्ज करेंगे अपने कस्टमर, tenant in Maharashtra who is registered recipient. He will take credit provided he is using the same for taxable supplies. यानी आपको सेपरेट रजिस्ट्रेशन महाराष्ट्र में लेने की जरूरत नहीं है। क्वाइट ऑब्वियस, अगर मान लीजिए आपकी 30 इमूवेबल प्रॉपर्टी 30 डिफरेंट स्टेट में हो, तो क्या आप 30 रजिस्ट्रेशन लेंगे? इट इज नॉट गोइंग टू द ईज ऑफ बिजनेस. It is not only registration, later compliances under GST law. आपको सेपरेट रजिस्ट्रेशन महाराष्ट्र में लेने की जरूरत नहीं है। अब प्रॉब्लम क्या आने वाली है, अगर आपने महाराष्ट्र में रजिस्ट्रेशन नहीं लिया बिंग लैंडलॉर्ड, तो जो भी आप इनपुट सर्विसेज पर्टेनिंग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी आप ले रहे होंगे, तो जो भी आपको सर्विस दे रहा होगा, जो सप्लायर आपको सर्विस दे रहा होगा पर्टेनिंग टू दिस इमूवेबल प्रॉपर्टी, वो सीजीएसटी एंड एसजीएसटी चार्ज कर रहा होगा। उसकी क्रेडिट आपको डेली रजिस्ट्रेशन में नहीं मिलेगी। इतना ही आपको नुकसान होने वाला है। यानी अब आपका बिजनेस कॉल होगा कि आप इतने नुकसान को अपने ऊपर लेना चाहते हैं। अगर आप लेना चाहते हैं तो नो नीड ऑफ सेपरेट रजिस्ट्रेशन इन महाराष्ट्र, नहीं लेना आपको। एंड रजिस्ट्रेशन, जैसा कि मैंने कहा, रजिस्ट्रेशन इज वन क्वेश्चन बट सब्सिक्वेंट ऑल कॉम्प्लायंसेस। तो आपको देखना है whether you want to take cost of this credit which is available if you are taking separate registration in Maharashtra. अगर सेपरेट नहीं लिया तो एक क्रेडिट का नुकसान आपका होगा। तो आपको बिजनेस कॉल लेना है। कंक्लूजन ये हुआ, नो सेपरेट रजिस्ट्रेशन इन महाराष्ट्र, ट्रांजैक्शन वुड बी इंटरस्टेट, आईजीएसटी टू बी चार्ज, एंड आपके क्लाइंट टेनेंट जो महाराष्ट्र रजिस्टर्ड है उसको क्रेडिट मिल जाएगी। दिस इज द सेकंड कैप्सूल ऑन क्रिटिकल क्वेश्चन अंडर जीएसटी लॉ with simple explanation and lucid form. Hope you're liking it. Put your comment in the comment box. Thanks for watching. You may tune together on my social media, LinkedIn, Twitter, Facebook, YouTube. आप सब्सक्राइब कीजिए and we'll continue to have this learning together. सबका साथ, सबका विकास. Thanks for watching. Thank you very much.